Hello, dear students. Welcome to the class today. So, um, as we are proceeding towards the end of this chapter, revision of this chapter, Socialism in Europe and Russian Revolution. So, this is the chapter which has taught us a lot about Russia and about the communist society, how in Russia a communist society was formed, and what was the major processes through which communist regime was stored in Russia. What was the role played by Lenin? We have understood that. Now, we have understood about the February Revolution, and we also understood about the October Revolution. Two revolutions had happened, and that has led to an overhauling change in Russia. Got it? So, what has happened is that during this time, during the civil war, abhi internally lot of disturbances were there because initially the support that Lenin had got. Now, this was the time when Lenin was getting unpopular. His popularity was going low. And the Bolsheviks, they were keeping the industries and banks nationalized. Peasants were allowed to cultivate the land. Dekho, yahan pe try to this thing that Lenin wanted a different kind of a society in Russia. Bolsheviks were confiscating lands because they wanted यहाँ पे now they were moving towards a society which was not individual, it was collective. जो भी काम होगा सब लोग मिलके करेंगे, अलग अलग कोई भी काम नहीं करेगा. That was the major thing. Got it? So there was planning was introduced. Now, centralized planning was introduced. How did they make it centralized? सारी चीज़ें बोल्शेविक्स ने अपने हाथ में रखी. Now they said कि whatever processes of changes that will happen in Russia, it would be as per the orders of the government. Got it? And now what they were doing, they were making a very planned economy. Lot of things that were to be introduced, it was to definitely benefit the Russian people. They were moving forward with this idea in the mind that changes needs to be happened, lekin it should be always positive. So for that purpose, इन्होंने कहा कि they told to the people of Russia, give us some time. हम आपको चेंजेस ला के दिखाएंगे, हम पूरा बदलाव करके दिखाएंगे. For that purpose, they made the 5-year plans. Okay? And government had fixed all the prices. They wanted to promote industrial growth. First 2 plans they have made. मतलब 5 years का 2 प्लान बनाया था. मतलब 10 साल के अंदर इन्होंने डिसाइड कर लिया था. They have decided that they will be bringing all changes in Russia. Now what happened? First thing that they had decided, first thing that they needed to do is socialist. Just see one example is given here कि how did they bring changes. बदलाव की अगर बात कर रहे थे तो किस तरीके से बदलाव आया. पहला क्या था? There was socialist cultivation in a village in the Ukraine. यूक्रेन नाम का, यूक्रेन में एक छोटा सा गांव था. वहाँ पे they brought the changes. They started working towards change. How did they do it? सबसे पहले इन्होंने क्या किया? A commune was set up. Commune means community was set up. पूरा एक ग्रुप बनाया इन्होंने. एंड पहला इन्होंने क्या किया? दे हैव कन्फिस्केटेड 2 farms. कन्फिस्केट मीन्स देखो कब्जा करना.
They captured the two farms. 13 families were there. Total 70 people were there. क्योंकि कहीं तो शुरुआत करनी पड़ेगी. Research work that they had done, they had to carry forward that research work. Russia, they wanted to develop. And फार्म में इन्होंने क्या किया, सारे टूल्स जो थे इट वॉज टर्न्ड ओवर टू द कम्यून. मतलब वॉट एवर प्लानिंग विल बी डन, इट वुड बी डन अकॉर्डिंग टू दीज 70 पीपल. मेंबर्स जितने भी लोग थे, दे वर ईटिंग इन अ कम्युनल डाइनिंग हॉल. Income was divided according to the principles of cooperative communism. Entire proceeds of the members' labor, as well as all dwellings, facilities belonging to the commune, was shared by the commune members. Here commune means community. Please don't get confused. Got it? Now, I told you just now we were discussing that there were 2 5-year plans that was introduced, and it started from 1927 to 1932 one plan, and 1933 to 1938 another plan. Got it? Now what happened, इससे क्या हुआ. देखो planned way में आप कभी भी काम करेंगे. अभी जैसे next year you will be boards, you should make a proper plan. ठीक है, बोर्ड में you have to appear, you have to give the board examinations, you have to think and plan. Got it? आपको बहुत सोच के फिर प्लान करना है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसे हो. जैसे अब कि अगर आपको 100 मार्क्स लाना है, आप डेली कितनी पढ़ाई करोगे, किस तरह से चीज़ों को मैनेज करोगे. Please understand this thing. I am just citing an example कि planned way में when anything is done, success is definitely to be achieved. ठीक है, कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी. So 1927 to 1932 first 5-year plan, 1933 to 1938 second. Centralized planning was there. It led to economic growth. काफ़ी इससे तेजी से growth हुआ and industrial production जो है वो काफ़ी बढ़ गया. Industrial production had increased between 1929 से 33 के बीच में 100% increase was there. This community working was doing lot of wonders. काफी benefit मिल रहा था लोगों को इससे. Okay, and new factory cities were coming up. New factory cities came into being. These positive changes were making people very hopeful for a better future. कौन नहीं चाहता डेवलपमेंट, कौन नहीं चाहता अच्छे से पैसा कमाना, and who doesn't want a proper life. Got it? Try to understand in a simple manner. That is what I am explaining. Got it? Now what happened कि construction lot was happening. काफ़ी बड़े लेवल पे चेंजेस हो रहे थे. इंडस्ट्रीज वेयर बीइंग एस्टैब्लिश्ड, लेकिन मोर डेवलपमेंट मीन्स मोर वर्क, मोर इन्वॉल्वमेंट ऑफ पीपल, रैपिड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज वेयर हैपनिंग. इट वॉज लीडिंग टू पुअर वर्किंग कंडीशंस. गॉट इट? जैसे अभी हमको अब देखो, एवरी टाइम व्हाट हैपन्स व्हेन समथिंग इज बीइंग एक्सप्लेन्ड, कोई भी चीज़ जब आपको समझाई जाती है, इट इज़ थ्रू द मेथड ऑफ एग्जाम्पल. यहाँ पे इन्होंने बताया है कि एक छोटा सा शहर था. शहर का नाम क्या था? व्हाट वाज द नेम ऑफ द सिटी? मैग्निटोगोर्स्क. ठीक है, दीज आर रशियन नेम्स, तो ये ऐसे ही होते हैं. मैग्निटोगोर्स्क. स्टील का यहाँ पे एक इंडस्ट्री लगाई गई. देयर वॉज अ स्टील प्लांट वॉज लेड डाउन हियर. 3 years में 1 steel factory was open. Workers were having a very tough life. इंडस्ट्री खुली है तो लोग तो काम करेंगे ही ना. So what happened that workers were having a very tough life, and as a result 550 times people have gone for strike. ठीक है, क्या है कि टफ वर्किंग कंडीशंस में आप कुछ समय तक तो ठीक काम कर लेते हो, लेकिन उसके बाद क्या होता है, देयर हैज़ टू बी
सर्टेन वेज एंड मीन्स जिसमें कि काम सही तरीके से नहीं हो पाता है. The workers were having a very hard life. 550 times stoppage of work was there. फर्स्ट ईयर, पहले साल में ही 550 बार काम रुका. The people who were living in the quarters, जिनके लिए घर बनाया गया था, now what happened? The temperature, you know, Russia is the northern part of Russia is very cold. It is towards the pole ना, पोल के पास तो आपको पता है sun rays doesn't reach, तो it is the extreme cold area. People were living उस तरह की इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, and can you believe the temperature is below 40 degree Celsius. My dear children, 1 degree 2 degree में तो हमारी हालत खराब हो जाती है, and here you can see the workers are working below 40 degrees Celsius. My God, it's so tough to work. And ये जब जैसे इंडस्ट्रीज, when the industries are laid down, तो लिविंग क्वार्टर्स was given to the workers. वर्कर्स को रहने के लिए जगह दी जाती है. एंड लिविंग क्वार्टर्स में क्या था, विंटर में 40 डिग्री बिलो चला जाता था टेम्परेचर. सो यू कैन अंडरस्टैंड कि उस टेम्परेचर, देयर वाज 4-5 फ्लोर हाउसेस, लेकिन वॉशरूम क्या था ना, वॉशरूम कॉमन था. ओके, 5 फ्लोर का क्वार्टर बना दिया है, वॉशरूम का फैसिलिटी ही नहीं दिया है. And across the street in order to go to the toilet. Imagine the tough conditions. कि इतनी ठंडी में अगर रात में किसी को बाथरूम जाना है तो he has to come down to for going to the washroom. How difficult it is. Can we imagine a life like that? No. It's so tough. Okay. So schooling system was developing. Arrangement was made for the factory workers and peasants. कि बच्चे अगर हैं, लोग काम कर रहे हैं, उनके बच्चे हैं, they should be getting a proper schooling system. And factory workers के लिए all arrangement was made. Peasants had to enter the universities. Creche was also established. Now you might be thinking, what is a creche? Creche, where the parents go to the factories to work and children are kept there. It is generally it is for the working parents. Okay, and cheap public health care was provided. Living quarters were set up for the workers. All these developments were happening, but it was very uneven. Because government had been doing all the arrangements, लेकिन government did not had that kind of resources. जितना government चाह रहे थे उतना government कर नहीं पा रहे थे. Got it? Government wanted to give more facilities to the workers, but they were unable to. Now just see some of the pictures that are here. I would like to show these pictures to you. Yeah. This is Russian language में. Just see industry का picture is made. How industries have been laid down, and factories that were established. It was a mark of socialism. Got it? Just check it out. यहाँ पोस्टर बना हुआ है. Poster is saying the smoke from chimneys is the breathing of Soviet Russia. Means the smoke, is it a healthy air? No. कुछ चीज़ें होती हैं which is very क्या है कि आप उसको देख के सारी चीज़ें एक बार में समझ में नहीं आती हैं. It is very symbolic. सिर्फ दिखता है इस तरह से. And poster was saying the smoke from chimneys is the breathing of Soviet Russia. ये जो स्मोक निकल रहा था इसी से सोवियत रशिया वॉज ब्रीदिंग. मीन्स नॉट अ वेरी हेल्दी एयर. नाउ जस्ट सी फैसिलिटीज दैट वॉज गिवन टू द वर्कर्स. वर्कर्स को जितना भी फैसिलिटीज वॉज गिवन, चिल्ड्रन हु वेर देयर, वर्कर्स चिल्ड्रन वेर देयर, दे वर गोइंग टू द स्कूल्स. इन 1930s की पिक्चर है ये. दे आर स्टडिंग.
इकोनॉमिक सिस्टम को अगर समझना है, सोवियत इकोनॉमिक सिस्टम को समझना है, तो दीज काइंड ऑफ पिक्चर्स वेयर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन। यहाँ पे आप देखो एक छोटे से बच्चे की पिक्चर बनी हुई है। ही इज अ चाइल्ड एंड ही इज इन मैग्नीटोगोर्स्क, ही इज वर्किंग। एक तरफ तो वी आर टॉकिंग अबाउट सोशलिज्म, one side we are talking about socialism, we are talking about equality and more and more importance to be given to all। लेकिन यहाँ पे इस बच्चे की हालत आप देख लो। Got it? A child in Magnitogorsk, look at his condition during the first 5-year plan. He is working for Soviet Union। अच्छा, one picture that is very impressive, मैंने पहले भी बताया था। Just see, this is the kitchen. The workers will be coming and having their lunch in this kitchen, क्योंकि workers को घर जाने की इजाज़त नहीं थी। What will happen? Many a times it used to happen कि workers घर जाते थे तो वापस नहीं आते थे family के साथ। देखो, everybody wants to spend time with the family. So what did the factory owners do? They were very smart. आधे घंटे की भी छुट्टी हम क्यों दें वर्कर्स को? Got it? That's why these kind of kitchens were made, and these kind of kitchens were serving food to the factory workers. Now, क्या होता है, many a times it happens कि हम सपना तो कुछ देखते हैं लेकिन reality कुछ और होती है। Every time it's not necessary that the dreams are fulfilled. Got it? तो one of the workers, one of the child is writing that my dear grandfather Kalinin। अभी ये किसने किसको लिखा है? This is a letter of a 13-year-old worker। 13-year-old worker, पहला तो this is only very sorry state। 13 साल के बच्चे से काम कैसे करा सकते हैं? 13 साल का बच्चा जो है वो वर्कर है। ही इज राइटिंग टू कैलिनिन, एंड हु वाज कैलिनिन? कैलिनिन वाज द सोवियत प्रेसिडेंट। ओके, एंड ही इज राइटिंग, क्या इन्होंने लिखा हुआ है? दैट ही इज सेइंग कि फैमिली इसकी बड़ी है, देयर आर 4 चिल्ड्रन। पिताजी नहीं है, ही हैड डाइड फाइटिंग फॉर द वर्कर्स कॉज, मदर इज एलिंग। तो ही इज सेइंग कि लेनिन का जो सपना था, ही जस्ट सी इट इज मेंशन्ड हियर, व्हाट व्लादिमीर लेनिन सेड कि आई हैव टू स्टॉप गोइंग स्कूल। ही वांटेड एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन, लेकिन घर के हालात को देखते हुए इस बच्चे को एजुकेशन नहीं मिल रही है। गॉट इट? बहुत सॉरी स्टेट है, कभी कभी पढ़ के बड़ा दुख भी होता है, लेकिन दैट्स हाउ द रियलिटी वाज। सच्चाई एक्चुअली यही थी। ओके, एंड ही हैज़ टू स्टॉप गोइंग टू स्कूल। इनके पास रिलेटिव्स नहीं है, nobody is there to help them also, so he is working in a factory and preventing भाई भूखे तो नहीं मारेंगे ना। when the family members see कि family's condition is very bad, तो बड़ा बच्चा जो है वो चला जाता है काम करने के लिए। पुअर फैमिलीज में दिस इज वेरी कॉमन ट्रेंड दैट द एल्डर चाइल्ड गोज फॉर वर्किंग एंड he is working in the factory to prevent the family from starving. So president ko he is addressing as grandfather. Dear grandfather, I am 13, I study well and have no bad reports. I am in class 5. Imagine. Okay, so he is saying ki I मतलब कि he is appealing for study. यहाँ पे एक चीज़ दिमाग में आ रहा था, I just wanted to share with you children. क्या होता है, many a times it happens that the facilities that we are getting, we don't realize that how lucky we are. हम कितने लकी हैं, हम कितने अच्छे से सारा काम कर सकते हैं, वो हम सोचते नहीं हैं. ओके, एंड किसी न किसी तरह से अपना काम आगे निकालने में लगे रहते हैं,
लेकिन जब सारी सच्चाइयाँ सामने में आती हैं तो समझ में आता है कि हाउ टफ द लाइफ इजंट इट. Now the next thing that was there, another leader, another follower of Lenin. What was his name? His name was Stalin. जितना लेनिन को जाना जाता है रशिया में, उतना ही स्टालिन को भी जाना जाता है. लेनिन वॉज लाइक गांधी एंड स्टालिन वॉज लाइक नेहरू. मैं कंपेयर करके इसलिए बता रही हूँ सो दैट यू अंडरस्टैंड द थिंग्स इन अ सिंपल मैनर. Now what happened? Stalin ने क्या किया? He has given the idea of collectivization. He is saying कि the period of the early planned economy, जो पहले का समय था, it was linked by the disaster of collectivization of agriculture. एग्रीकल्चर को ये सारे लोग जो हैं इन्होंने कलेक्टिवाइजेशन कर दिया. सो व्हाट कलेक्टिवाइजेशन के वजह से देयर वॉज अ डाउनफॉल इन एग्रीकल्चर. प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम था, समवेयर इट वॉज नॉट लाइक्ड बाय द फार्मर्स. इम्पोज तो कर दिया, लागू तो कर दिया, लेकिन फार्मर्स वेयर नॉट एट ऑल हैप्पी विद दिस अरेंजमेंट. प्लान्ड इकोनॉमी में क्या था? देयर वॉज, देखो द वर्ड हैज बीन यूज्ड कि एग्रीकल्चर में कलेक्टिवाइजेशन हैड लेड टू डिजास्टर्स. बहुत ज्यादा बर्बादी हुई. 1927-28 में क्या हुआ? सोवियत रशिया वॉज फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ ग्रेन सप्लाई. गॉट इट? अनाज का जो इन लोगों को सप्लाई मिल रहा था, अनाज का जो इनका भंडार था, वो धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था. ओके, एंड गवर्नमेंट ने क्या किया था ना, दे हैव फिक्स्ड द प्राइसेस. सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहीं पे हुई. Suppose I am a farmer. Try to understand with the help of an example. I always explain with the help of an example. Suppose I am a farmer. I am growing wheat. And while growing wheat, I have invested good amount of 1 lakh rupees. Okay? और जो wheat मैंने grow किया है, for per kg, it is 25 rupees per kg. But the government has fixed the price at 20 rupees per kg. तो क्या हो रहा है? When I'll go to sell the wheat, जब मैं गेहूं बाजार में सेल करने के लिए जाऊंगी तो मुझे तो गवर्नमेंट प्राइस पे ही सेल करना है, लेकिन मेरी लागत तो कुछ और है. माई इन्वेस्टमेंट इज समथिंग डिफरेंट. वाई? जस्ट सी द पॉइंट इज गिवन हियर. ओके, पीजेंट्स ने कहा कि ऑब्वियसली भाई लो, व्हाई विल द पीजेंट्स सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड लॉस? उन्होंने कहा हम क्यों नुकसान सहें. ओके, पीजेंट्स रिफ्यूज टू सेल देयर ग्रेन टू गवर्नमेंट बायर्स एट दिस प्राइस, एंड बाय दिस टाइम Stalin was heading the Bolshevik party. Stalin was the person who was managing everything. He said कि he told the farmers that they are going to be very strict. अब ये काफी stern measures लेंगे. He was heading the party. He introduced firm emergency measures. इमरजेंसी लगा दी इन्होंने कहा कि रिच पीजेंट्स और ट्रेडर्स जो है ना, ही वॉज ऑफ द माइंड, एंड ही वॉज नॉट ओनली ऑफ द माइंड, कभी कभी इट यूज टू हैपन कि फायदे के चक्कर में. अभी यहाँ पे आई विल गिव यू द एग्जांपल ऑफ ओनियन. ओनियन क्या होता है ना, अक्सर लोग स्टॉक करके होल्ड करके रख लेते हैं. तो फार्मर्स एंड द ट्रेड क्या करते हैं, जो सामान स्टॉक करके रखते हैं, obviously in the market the same good is not available at low price. उसके कॉस्ट बढ़ जाते हैं. they buy at 20 rupees kg. they wait कि जब 80 rupees kg हो जाएगा फिर बेचेंगे. imagine the profit margin, 300% profit. by 20 का 100% would be 40, उसके बाद 40 का 100% would be 80.
तो 20 रुपीज़ का सामान जब 80 रुपीज़ kg में बेचेंगे तो आप ये सोच लो what kind of a benefit they have. So he was, what did he do? इन्होंने कहा कि ये जितने भी स्टॉक वाले हैं who has hoarded the goods, सामान जमा कर करके रखा हुआ है, it has to be stopped, इसको रोकना है, and supply is to be confiscated, जितना सामान है वो सारा कब्जे में ले लेना है. 1928 में क्या हुआ? The party members, जो इनके पार्टी के लोग थे ना, they went to the countryside किया, and they supervised the grain collection, कि कितना अनाज आखिर, how much of grain is there in the market, and they raided the collacs. Raid is there ना, अचानक से आके inspectors come and then they just keep on checking कि कितना सामान वो हुआ है, कितना सामान लोगों ने जमा करके रखा हुआ है, how much of things are there in the market, what are the things that people have hoarded. Okay, so they came, all the government officers, they came and they started raiding the collacs. हाँ, the well-to-do peasants, जो peasants बहुत अच्छा, I mean those who were very rich. Okay, peasants, they were called as collacs. Shortage continued, so it was decided कि now the farms would be collectivized. जैसे नहीं, they have done the industrialization process में, they have made the commune और उसी के through सारा काम हो रहा था. In the same way, they had also collectivized the farms. सारे farms को एक कर दिया. And जैसे in India we call farmers को farmers कहते हैं, हिंदी में किसान कहते हैं. In this way, there were the rich peasants, the rich farmers in Russia were called as kulaks. Please remember, many a times it happens that the students still and don't understand what is the meaning. Ma'am, kulaks का मतलब क्या है? Kulaks का मतलब नहीं समझ में आया. Why? As simple as that, just the farmers were called as the kulaks. Okay. Shortage continued. Decision was taken to collectivize the farms. And it was argued, ये बार बार इस चीज़ के ऊपर बहस चल रही थी कि grain shortage was due to small size of holdings. छोटे छोटे जो holdings थे उसके वजह से shortage of grain was there. 1917 के बाद land was to be given over to the peasants. 1917 के बाद इन्होंने कहा कि peasants would be taking up all the land that is there. It was to be given back to the peasants. Small peasant farms को modernize करना है. आखिर what happens is कि traditional method and traditional ways are not leading to progress. कहीं ना कहीं तो आगे बढ़ेंगे ना कहीं तो कोशिश करेंगे. So what did they do? Industrial lines पे modern farms were developed जहाँ पे can you imagine that all the agriculture work was happening with machines. मशीन के थ्रू सारा काम हो रहा था. So it was necessary, अभी बहुत ज़रूरी हो गया है that the kulaks should be eliminated. And all the land has to be taken away from the peasants, and large farms were to be established. Large state controlled farms were to be established. Got it? Now what happened? Stalin had started with the collectivization program. You need to understand this collectivization program. Okay? 1929 onwards, पार्टी ने क्या किया? इन्होंने कह दिया कि now the peasants will not do the farming on their own. अलग अलग farming नहीं करेंगे. They all will be working in kolkhoz. कहाँ काम करेंगे? They all will be working in kolkhoz. Kolkhoz में क्या था? The working in the kolkhoz, the process was totally different. Because kulaks were hoarding the goods.
तो kolkhoz was established. It was collective farm. It was collective way of working, where the peasants were working on the land and kolkhoz profit was shared. सारे लैंड को एक में ले आए. All the land was brought into one, and the kolkhoz profit that was there, it was shared. Peasants were very angry. They said कि authorities and the higher officials are not thinking about peasants. आप सोच रहे हैं लेकिन किसानों के बारे में कोई नहीं सोच रहा है. So people were not very happy. And at 29 to 1931, number of cattle fell by 1/3. मतलब जानवर भी मर रहे थे. Many of the cattle means गाय भेड़ बकरी, ये जो सारे होते हैं. तो this was the condition that was existing. ये kolkhoz and its process, इसको मैं एक बारी नेक्स्ट क्लास में फिर से बता दूंगी. गॉट इट? एंड देन वी विल बी कंप्लीटिंग द क्लास इन द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में. ठीक है? ओके चिल्ड्रन, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू यू.